ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے دن تاریخی مندی کا سامنا ہے۔ سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے ہیں۔ کاروبار کے آغاز سے ہی مارکیٹ شدید مندی کا شکار رہی۔ 100 انڈیکس میں تاریخ کی بدترین گراوٹ، متعدد نفسیاتی حدیں کھو بیٹھا۔ 16,089 پوائنٹس کی کمی کے بعد 100 انڈیکس 1,51,972 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ایک موقع پر KSE 30 انڈیکس 9.42% گرنے پر کاروبار 45 منٹ کے لیے روکنا بھی پڑا۔ کاروبار کے دوران PSX 100 انڈیکس 8.97% گرنے پر سرکٹ بریکر کا اطلاق بھی کیا گیا۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے دن تاریخی مندی۔ اب آپ کو بتائیں کہ مشرق وسطی میں جنگ سے دنیا بھر کی اسٹاک ایکسچینجز میں بھونچال آ گیا ہے۔ ممبئی اسٹاک ایکسچینج کا سینکس 1291 پوائنٹس کم ہو کر 79,995 ہو گیا ہے اور ساتھ ہی 416 پوائنٹس کم ہو کر 24,761 ہے۔ دوسری جانب جاپان اسٹاک مارکیٹ 1.9% اور کورین اسٹاک مارکیٹ 2% گر گئی۔ مشرق وسطی میں جنگ کے منفی اثرات پاکستان اسٹاک پر بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں، جہاں 100 انڈیکس میں 15,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی سے کاروبار کا آغاز ہوا ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ سے دنیا بھر کی اسٹاک ایکسچینجز میں بھونچال آ گیا ہے۔ ممبئی اسٹاک ایکسچینج کا سینسیکس 1291 پوائنٹس کم ہو کر 79,995 ہو گیا ہے اور نفٹی 50 416 پوائنٹس کم ہو کر 24,761 ہے۔ دوسری جانب جاپان اسٹاک مارکیٹ 1.9% اور کورین اسٹاک مارکیٹ 2% گر گئی ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے منفی اثرات پاکستان اسٹاک پر بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں، جہاں 100 انڈیکس میں 15,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی سے کاروبار کا آغاز ہوا۔ مشرق وسطی میں جنگ سے دنیا بھر کی اسٹاک ایکسچینجز میں بھونچال آ گیا ہے۔ ممبئی اسٹاک ایکسچینج کا سینسیکس 1291 پوائنٹس کم ہو کر 79,995 ہو گیا اور نفٹی 50 416 پوائنٹس کم ہو کر 24,761 ہے۔ دوسری جانب جاپان اسٹاک مارکیٹ 1.9% اور کورین اسٹاک مارکیٹ مشرق وسطی میں جنگ، عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے چاندی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ کراچی میں فی تولہ سونا 13,300 روپے کے اضافے سے 5,63,862 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 11,402 روپے کے اضافے سے 4,83,420 روپے ہو گئی۔ عالمی منڈی میں فی اونس سونا $133 مہنگا ہو کر $5,411 ریکارڈ کا ہو گیا ہے۔ کراچی میں چاندی کی فی تولہ قیمت 188 روپے بڑھ کر 10,050 روپے ہو گئی ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ، عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے چاندی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ کراچی میں فی تولہ سونا 13,300 روپے کے اضافے سے 5,63,862 روپے کا ہو گیا ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت 11,402 روپے کے اضافے سے 4,83,420 روپے ہو گئی ہے۔ عالمی منڈی میں فی اونس سونا $133 مہنگا ہوا ہے، $5,411 کا ہو گیا ہے۔ کراچی میں چاندی کی فی تولہ قیمت 188 روپے بڑھ کر 10,085 روپے ہو گئی ہے۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں 10% اضافہ ہوا ہے۔ تیل کی عالمی قیمت $80 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ بحران جاری رہا تو تیل کی عالمی قیمت $100 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ اس سال تیل کی قیمت پہلے ہی بڑھتے ہوئے $73 فی بیرل تک جا پہنچی تھی۔ ایران پر اسرائیل اور امریکی حملوں کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں 10% اضافہ ہوا۔ تیل کی عالمی قیمت $80 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ ماہرین کا یہ اندازہ ہے کہ بحران جاری رہا تو تیل کی عالمی قیمت $100 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ اس سال تیل کی عالمی قیمت پہلے ہی بڑھتے ہوئے $73 فی بیرل تک جا پہنچی تھی۔ اب آپ کو بتائیں کہ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات کی مانیٹرنگ کمیٹی کے لیے خصوصی کمیٹی بنا دی گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 18 رکنی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ کمیٹی میں توانائی اور پیٹرولیم کے وزراء سمیت متعلقہ اداروں کے اعلیٰ حکام اور گورنر شامل ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور دستیابی کی مؤثر نگرانی کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کر دی ہے۔
नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 रुकनी कमेटी वज़ीर खजाना की सरबराही में तश्कील दी गई है, जो मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों, ज़खायर और सप्लाई की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखेगी। कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लेगी और स्टॉक और सप्लाई की सूरत हाल पर बाकायदा रिपोर्ट मुरतब करेगी। कमेटी अपनी रोजाना की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। अलामिया के मुताबिक कमेटी में वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक समेत मुतल्लिका इदारों के आला हुक्काम और गवर्नर भी शामिल हैं। हुक्काम का कहना था कि खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस तेल की आलमी मंडी में मुमकिन उतार चढ़ाव के असरात से निमटने के लिए पेशगी इकदाम किए जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद ईरान की नई क़यादत से बातचीत के लिए आमादा है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि वो नए ईरानी रहनुमा से बात करने पर राजी हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के नए रहनुमा भी उनसे बातचीत करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीका ने ईरान की 48 अहम शख्सियात को मार दिया है। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल ख़त्म हो गई है। पासदारान इनकलाब की तनसीबात ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया है। 9 बहरी जहाज़ और ईरानी बहरिया की इमारत को भी निशाना बनाया है। बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत के बाद ईरान की नई क़यादत से बातचीत के लिए आमादा है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में ट्रंप का ये कहना था कि वो नए ईरानी रहनुमा से बात करने पर राजी हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के नए रहनुमा भी उनसे बातचीत करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि अमरीका ने ईरान के 48 अहम शख्सियात को मार दिया। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल ख़त्म हो गई है। पासदारान इनकलाब की तनसीबात ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। साथ ही 9 बहरी जहाज़ और ईरानी बहरिया की इमारत को भी निशाना बनाया गया और बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया गया। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी ने सोशल मीडिया पर बयान में यह ऐलान किया कि ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। अली लारिजानी का इससे पहले एक बयान में यह भी कहना था कि अमरीकी सदर ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। ईरानी कौमी सलामती के सरबराह अली लारिजानी ने सोशल मीडिया पर बयान में ऐलान किया था कि ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। अली लारिजानी का इससे पहले एक बयान में कहना था कि अमरीकी सदर ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया है। ईरान में बड़े पैमाने पर अमरीका के फ़िज़ाई हमले जारी हैं। तेहरान में इतवार की रात और आज सुबह नए इसराइली हमले किए गए। अमरीका ने पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स को तबाह करने का दावा भी किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि ईरान में 1000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया है। जिन अहदाफ को निशाना बनाया है उनमें पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर्स भी शामिल है। IRGC एयरोस्पेस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, ईरानी बहरिया के जहाज़ों पर भी हमला किया गया है। अमरीका और इसराइल के हमलों में तेहरान में अस्पताल को निशाना बनाया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक शुमाली तेहरान में वाक़या गांधी अस्पताल पर मिसाइलों से हमला किया गया है। हमलों से तेहरान में अस्पताल और रिहायशी इमारतों को बुरी तरह नुकसान पहुँचा है। आपको बताएं कि ईरान में बड़े पैमाने पर अमेरिका के फ़िज़ाई हमले जारी हैं। तेहरान में इतवार की रात और आज सुबह नए इजरायली हमले किए गए। अमेरिका ने पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से एक्स पर जारी बयान में कहा गया कि ईरान में 1000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया है। जिन अहदाफ को निशाना बनाया उनमें पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर भी शामिल है। IRGC एयरोस्पेस फोर्सेस के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, ईरानी बहरिया के जहाज़ों पर भी हमला किया गया। अमेरिका और इसराइल के हमलों में तेहरान में अस्पताल को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक शुमाली तेहरान में वाक़े गांधी अस्पताल पर मिसाइल से हमला किया गया। हमलों से तेहरान में अस्पताल और रिहायशी इमारतों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। वेलकम बैक। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में शहादतों की तादाद 555 हो गई है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के सूबे यज़्द और फारिस को भी बमबारी का निशाना बनाया है, जहां 2 रोज़ के दौरान 62 अफराद शहीद हुए हैं। ईरानी हुकाम का बताना है कि गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान यज़्द पर किए गए अमेरिकी और इसराइली हमलों में 27 अफराद शहीद हुए हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक सूबे फारिस में अमेरिका इसराइल हमलों में 35 अफराद शहीद हुए हैं।
ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक अमरीका और इजराइल के ईरान पर हमलों में शहादतों की तादाद 555 हो गई है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम वरहमहुम वला तुअज़्ज़िबहुम वअस्किनहुम फ़िल जन्नह। अल्लाहुम्मा जअल क़ुबूरहुम रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह। अल्लाहुम्मा जअल क़ुबूरहुम रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल हयाई मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दाअवात। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। I invite Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Asif Ali Zardari, to address under Clause 3 of the Article 56 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan to both houses assembled together. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Chairman Senate Sayyid Yusuf Raza Gilani, Speaker of the National Assembly Sardar Ayaz Sadiq, Prime Minister Muhammad Shahbaz Sharif, Honorable Members of the Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. It is my singular privilege as your twice elected President to address the August House for the 9th time at the beginning of a new parliamentary year. Each such address is a reminder of continuity of our democratic system and of the responsibility we carry as representatives of people of Pakistan. Nations are tested only in times of crisis, but a key crossroad. The past year has reminded us that the strength of our republic lies in its constitution, in the resilience of our people, the responsibilities of parliament and government, and courage of our armed forces. As we begin a new parliamentary year, we must build upon the resilience, safeguarding sovereignty, strengthening constitutional governance, and advancing economic transformation so that the stability of because growth and generate prosperity, progress, for peace for every citizen. As we gather here today, we stand on the foundation laid by those who shaped our national journey. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah envisioned a democratic state rooted in the constitutionalism and rule of law. Shaheed Zulfikar Ali Bhutto gave this nation in its unanimous constitution. Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto strengthened democracy process through sacrifices and exemplary leadership. My own belief in the parliamentary authority does not lie in words alone, but in action that builds our legacy. The last time I was president, I unilaterally returned the powers given to the presidency back to the House of Parliament as envisioned in the 1973 Constitution. Through historic 18th Amendment, today the presidency stands as symbol of unity, of federation, a bridge between federating units and a guardian of constitutional laws, and binds us all. Honorable members, the past 10 months tested our nation in profound and complex ways. When our sovereignty was challenged on either front, Pakistan responded with strategic restraint and firm resolve. When confronted with unprovoked attacks on both our borders, one after the other, our armed forces acted without
outstanding professionalism and discipline. In the case of Markai-Haq, they turned India's attack on our motherland into a landmark strategic victory. On the western border, when the Taliban regime ramped up a long line of attacks, the night of 26th February, our security forces acted decisively to tolerance for any incarcerations or sovereign territory. The political leadership stood united. The people stood resolute. At the outset, I want to express my nation's undying gratitude to the heroic defenders of our borders. It is because of the vigilance, bravery, and service that we are sitting here secure in our workplace and homes. In both successive military encounters, whether short or long, the sacrifices of our army, our forces, navy, rangers, frontier corps, police services, and intelligence agencies will never be reduced to numbers. We only see their action on the media with pride. We don't really see the blood and sweat and tears that go into their training and hardship and service. Each operation reflects planning, discipline, and restraint. Each martyr represents a family that's upon ultimate service for Pakistan's stability. When I visit the families, I feel the same pain that I felt when I lost my wife, Shaheed Mohtama Benazir Bhutto, who was martyred by terrorists in the prime of her life. I therefore remind you all that as state we must continue to support their families with dignity and honor. 2025 marked a turning point for Pakistan's defined by the resounding military victories in Markai-Haq, which decisively repelled external aggression and shattered the myth of regional conventional superiority. Nobody in South Asia will be free and safe until the Kashmiris win their freedom for Indian occupation. Today, trapped in the strategic short-sightedness, India's leaders said they are preparing for another war. As a lifelong advocate of regional peace, I would not recommend it. At the same time, I would also say that any aggressor should prepare for another humiliating defeat. Make no mistakes, we are ready for you. My message to them is move away from war theatre to meaningful negotiation tables, because that is the only path for the regional security. Pakistan is a responsible nuclear state. We understand the weight of that responsibility. At the same time, we are a state that defends itself decisively when required. Our conduct reflects maturity, confidence, clarity of purpose. In 2025, we acted when necessary and exercised restraint. Once objectives were achieved, the message was understood clearly within region and beyond. In 2026, last week, in fact, when India began to amplify the proxy operations via Afghanistan, the Taliban regime saw with shock and awe what Pakistan can do if pushed past the red line. Until that week, we had tried every possible form of diplomacy to prevent an outbreak of military response to terrorist incursions from Afghanistan, for as war, as always, the last option to state accepts a strike attack on its soil. Article 51
of the UN Charter gives us the right to defend our sovereignty. We let both India and Afghanistan see a fraction of our capabilities. Over the last 3 years, our armed forces and law enforcement agencies have undertaken determined intelligence-based operations against Indian-sponsored foreign terrorists. This is not a counter-terrorism campaign. The military is fighting alone. The entire nation stands united with its armed forces against cross-border terrorism. Our actions spelled out the limits of our tolerance for attacks from Afghanistan, particularly Indian-sponsored TTP and BLA and affiliates. Let me be clear. The soil of Pakistan is sacred. We will not allow any entity to domestic or foreign to use neighboring territory to destabilize our peace. The recent report from the United Nations Security Council monitoring team has described presence of terrorist groups in Afghanistan as an extra-regional threat. This report warns that any other country could fall victim to another catastrophic attack if the issues are ignored. However, it is a sad fact that despite multiple diplomatic engagements by Pakistan and our friendly brother countries, the Afghan de facto regime continues to provide safe sanctuaries to a variety of terrorist groups, including Al-Qaeda, BLA, and TTP. All promises they made in Doha not to allow these terror groups to operate from Afghan soils have been conveniently forgotten. They must choose to dismantle the terror groups that survive on conflict and its war economy. None of this will feed Afghanistan's children or create opportunities for national cohesion. In our end, we have never treated the Afghan people as anything but kith and kin. We have never walked away from dialogue. The Afghan people need a break from endless wars. Don't take away the choice of the future of prosperity connected to peace. I would urge them to stop being used by other countries as a battlefield for their ambitions.